Good morning, students. Let's start with a quick revision first. Uh, who wants to take today's revision? Are yes, very good, Hemim. New student. Yes, Hemim. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चलो start कीजिए बेटा. Surrounding noise Yes, sir. बहुत रखिए इसे. उतना देखिए. Mhm. No surrounding noise, sir. हाँ हाँ चलो start. Okay. Yeah. Accounting has a two approach, traditional and modern approach. Traditional approach, we have three accounts: personal, nominal, and real. Personal account has takes place under due and settlement. Under due, it's debtor is debited and creditor is credited. When settlement takes place, creditor becomes the giver. Sorry, creditor becomes the receiver, and debtor becomes the giver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, all expenses are debited, all incomes are credited. Under a modern approach, all assets and expenses are debited, uh, and credit and capital liabilities are credited. Accounting standards. Accounting standard 1, disclosure of accounting policies. 2, valuation of inventories. 3, cash flow statements. 4, contingency and events occurring in balance sheet after the balance sheet. 5, net profit for the period, prior period, items and changes in accounting policies. 7, construction contracts. 9, revenue recognition. 10, PPE. 11, the effects of changes in foreign exchange rate. 12, accounting for government grants. 13, accounting for investment. 14, accounting for amalgamation. 15, employee benefits. 16, borrowing cost. 17, segment reporting. 18, related party disclosure. 19, leases. 20, earning per share. 21, consolidated financial statement. 21, accounting for taxes on income. 23, accounting for investment in associates in consolidated financial statement. 24, discontinuing operations. 25, interim financial reporting. 26, intangible assets. 27, financial reporting of interest in joint ventures. 28, impairments of assets. 29, provision contingent liabilities and contingent assets. Balance sheet pro forma starts with shareholders and liabilities, shareholder fund, share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, share application money pending allotment, non-current liabilities, under non-current liabilities, long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions, current liabilities, short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions, assets. Non-current assets, under non-current assets, PPE, intangible assets, capital work in progress, intangible assets and development, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. Current assets, current investment, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. Cash flow statements. Under cash flow statements, there are two approach, direct and indirect approach. Direct approach, we have to open the debtors account, and then under the indirect approach, we can directly start with net profit after tax and dividends. Very well answered, बेटा. Hemim. Sorry. Very well answered. Means revised it. Yes, good. Thank you, sir. चलो. Thank you, sir. Yes. So कल कहाँ थे बेटा हम लोग? Kal, we were doing like overall we were doing the reconstruction, which had like three methods: Okay. alteration, reducing liability, and the third one was compromise. We did all the illustration, and moreover, we also did the T We by Q completed problems. how many illustrations now we left with? Have you completed all Mm. homework?
Yes, sir. Just give me. कौन सा क्वेश्चन इज डिफिकल्ट वन? So far I didn't find, but some of them I tried myself and I was able to do it though. एक आध तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलो. चलो, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर. We completed first one, second one, third one, over. Fourth Yes, one. sir. We finished. Fourth one completed or remaining? Sir, we finished. Sir, regarding illustration or the TY case? No, no, no. Illustrations. Any difficulty, YK? No, sir. We did TY case in the class. All TYK were completed. Even the last one, 12th one, you told to do it, Okay. and that one also we did. अन्य हमारा TYK पूरा कंप्लीट हो गया बेटा. एक भी डिफिकल्ट नहीं है. So सारे complete to eighth कौन सा eight डिफिकल्ट निकाल आपने निकाला है लिस्ट? नहीं सर मैं इलस्ट्रेशन से कर रही थी अभी. ओके, इलस्ट्रेशंस इजी थे. यस सर. एक भी डिफिकल्ट नहीं है. नो सर. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. यस हेमी, we'll start with the illustration Yes. number 4. Let's check the answer. Okay, sir. We completed up So, to how many illustrations are there? 7. We completed up 8. Sorry, we have not completed 4, 5, 6. I think so. Correct? yes, sir. 4, 5, 6 are remaining, no? Yes, sir. चलो, Yes. start beta. हाँ. Yes. Just a moment, sir. First, you have to focus on these numbers, huh? 15,000 and 12,000 for preference shares. लावे છે કે મોનીશ? Yes. हाँ. Yes, sir. Ready. Okay. Today I want to see how much time you take for one question. I will explain it. Don't worry. And after explanation, Mhm. you have to solve by using tick-tick-easy technique. And everyone has to tell me their timings. Okay. In 30 minutes, we have to finish with balance sheet also. Journal entries plus balance sheet. First, we will discuss it. Don't worry that we will discuss it in the class. And after that, I will give you some time because many students, they are not doing it properly. So in class itself, I will take a practice of one question. Is it okay? Yes, sir. Yes, everyone has to do. Okay, same question by using tick-tick-easy technique, but first we will discuss it. Okay. Yes, the equity shareholders have agreed that their 50 shares would be reduced to 2.5 by cancellation of 47.5. How many shares are there, beta? There are a total number of shares of 15,000 equity shares. 15,000. So 15,000 Shares would uh, be into 2.5 means you will reduce it to 37,500. 37,500. 500. Okay, so entry will be equity share capital account debit 50. 50 to equity share capital 2.5 to capital Amount, reduction. amount, amount, amount. Yes, sir. Equity share capital debit, face 37,500. value 50, हाँ, 7 lakh 50, to equity share 7 lakh capital 50,000. 2.5, Okay, sorry. 750,000. Okay, okay, okay. It is. Okay. Then, Then to equity share capital 2.5 face value, that would be hmm, 37,500. To capital reduction, that will be 7 lakh 12,500. wait, beta. Yeah, sir. Hmm.
one equity share capital, two equity share capital, two reconstruction or capital reduction account. And then they agreed for three new equity shares, that is 45,000 into 2.5. Yes, sir. 1,12,500. Bank account debit to equity share capital, Debit correct? to equity share capital. Yes, sir. Yes. Next entry. So first one is over. Second one, only one entry. Huh. The preference holders have agreed to cancel their arrears of dividend and accept 50 rupees 50 per share, four new 5% preference shares and plus six new equity shares of 2.5 each. How many preference shares are there? So there are 12,000 preference shares, 12,000 7% preference cumulative shares of rupees 50 each. of So 6 rupees lakh 50 rupees. each. Okay. Cancel of arrears of dividend, that we don't pass any entry. Yes, sir. There will be no Uh, entry for that. okay. And for No the we entry are gonna because pass your for the contingent liability is getting cancelled. So if contingent liability is getting cancelled, no need of any entry. And your 12,000 into 50 gets converted into 48,000 into 10. Correct? 10. And Yes, sir. Then it would be 4 72,000 lakh 80, into 2.5. 2.5. 4 lakh 80,000. And here 72,000 into 2.5. 1 lakh 80,000. Correct? So Yes, sir. for 6 lakhs, you are giving shares of 4 lakh 20, 80 4 plus lakh 180. 80,000. 180. 6 lakh 60,000. So your 6 loss lakh 60. is capital reduction account debited 60,000. Correct? 60,000. Yes, sir. That would So be preference preference share share capital capital. cancelled by 6 6 lakhs. lakh. Huh? Yes, sir. Reconstruction account debit, which would be 60,000 Hmm. to 5% preference share capital, which is like 4 lakh 80, So which we are issuing new. you have to write dividend rate also for preference shares. For equity shares, but Okay, obvious sir. there is no dividend rate. Okay? Yes, sir. We Because have equity shares to dividend is 5% getting fluctuated every year. every You're year because of declaring the dividend profits. every year, different amount. Okay? No fixed rate. Different amount. Yes, very good. Yes, sir. Chalo, next one. Number two over. Number three. Lenders to the company 1,50,000 have agreed to convert their loan into share, and for that purpose, they allotted new preference shares of 10 each. So 1,20,000 and 12,000 into 2.5, 30,000. So there will be no loss. Loan account debit to 5% preference share Ye- capital to equity share capital. In bracket, you can write face values. Okay. Yes, sir. So third entry over. Fourth entry. Nope. Moriano लावे ना? हाँ. The directors have agreed to subscribe in cash for 40,000 new equity shares. So 40,000 into 2.5, Cash to bank bank account to account debit equity to share capital. equity share Equity capital. share Very good. capital. Numbers change करा बेटा फक्त. Next is of the cash received by issue new shares of 2 lakhs is to be reduced to the loan due by the company. अभी लोन कितना था बेटा? 5,73,000. तो loan account debit to bank 2 lakhs. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Then capital reduction hidden adjustment is there. You have to write over here 4,50,000. So capital 1,000. reduction to P&L Reduction to to profit and loss. To profit and capital. loss or to Sorry. plant. To plan. And then you have to check the capital reduction account balance. Now check on Calci capital reduction account first entry 7,12,500. Then in next entry debit. Debit means minus then नको? Minus 60,000. 60,000. Then again debit Then minus 4 lakh plus 4 lakh. 86,000 Yes, sir. minus Minus the P&L. हाँ minus 166,500. No, it's a balancing figure. 166,500 is a balancing figure, correct? Yes, sir, because we are transferring to plant and हाँ. machinery. And by looking into this, you will update your balance sheet. You know what is the process, and everyone will solve it. Though you have already solved,
but I want everyone use TKG technique and tell me your timings, how much time it takes to solve this question. Okay? Very easy question. Yes, sir. Uh, okay, you don't have to check it from my answer. Everyone has to do by their own. Chalo, so let's start. Today's session is like a revision for you. And in next session, I'm going to consider some past examination questions. Okay? Chalo, Yes, start. sir. Start. Chalo. Mute yourself. And please do this activity. It is only for your benefit. Otherwise, you cannot complete your paper within time. So this activity is very important and do it like exam way. Screen पे time चालू है तो after this you can write over there how much time it takes. So very simple question, but I just want to check timings of every student. Raise your hand after completion. Fried rice or chicken.
अन्या कितना टाइम? सर 25 मिनट्स लगे थे. रेज नहीं किया हैंड? $25 to $30. If you know this question, तो sufficient time. Maximum time you have in exam 1.8 minutes per mark. And your balance sheet tallies at, yes, Sushmita, your balance sheet tallies at 15,25,000, sir. 15,25,000. Same presentation. Acha, have you written and reduce? Yes, sir. In this balance sheet, we have to write this and reduce. Yes, sir, Okay. written. So 15,25,000 is the correct answer. Uh, check. Have you prepared this working notes properly? Working notes, no, balance sheet properly and notes to accounts. It is Yes, very sir. important. Yes, you can see the answer. Notes to accounts and long-term borrowings. Sushmita, sound surrounding noise. Okay. Yes, very good. Chalo. So now we will move to next illustration. We are going to complete it today. All illustrations. Yes. Who wants to answer? Illustration 5. Tanmay beta. Yes, sir. Illustration 5. Yes, sir. Chalo, start kare beta. हाँ. Now in this question, balance sheet. Yes, we'll discuss this again. And 20 minutes, 25 minutes maximum time I will give you for preparation. Today we'll do at least 2 illustrations का practice. Yes, sir. ठीक है, मतलब आपको एक आदत लग जाएगी. So that is, this session is very important from practice point of view. Now your concepts are very clear, but practice नहीं होती है आप लोगों की. वो टाइम में करनी चाहिए. प्रैक्टिस होती है बट टाइम लगा के नहीं करते हो आप लोग. And when you are solving your past examination questions, all questions you have to solve by using टिक टिकी टेक्निक. ओके, जो नहीं Yes. आएंगे तो छोड़ देना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है. नहीं आए तो एटलीस्ट एक जगह पे स्टक मत हो जाना. ओके, आगे का क्वेश्चन ले लेना. एंड वी Yes, विल sir. डिस्कस इट इन द क्लास इफ एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन इज देयर. ठीक है, Yes. आज मॉड्यूल खत्म करेंगे स्टडी मैथ क्वेश्चंस. एंड डे आफ्टर टुमारो विल डू. हाँ, नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज दिस चैप्टर इज इजी और डिफिकल्ट? Sir, easy. और इफ यू रैंक ऑल टॉपिक्स तो बहुत इजी चैप्टर कौन सा है Sir, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है? sir, this one. अच्छा, ये और बायबैक. Sir, buyback इसके बाद. नेक्स्ट Sir, फिर financial statements. एंड लास्ट वन. Cash flow statements, sir. ओके, आफ्टर वेडनेसडे वी आर स्टार्टिंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो while doing accounting standards you have to be very careful, you have to be very attentive. Do not skip a single session जो आप करते भी नहीं हो. You are not means according to me you never bunk the class. तो वो बहुत Yes. जरूरी था. And my simple tip is that, see, we have completed 30 marks का paper. Now accounting standard is almost 30 to 40 marks. This standards is 40 marks weightage, and then we will start with the amalgamation and consolidation. So that will also take
20 to 30 मार्क्स का क्वेश्चन, तो स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो पेपर कंप्लीट हुआ है हमारा 20, यू कैन से roughly 20 to 30 marks when we started our journey on 19th January. 19 January, and today is 22nd Feb. It's almost 1 month. बैच Yes, sir. कितने महीनों के पता है आपको? No, sir, not exactly. 4 months जाएगा बैच। ये बैच अपना 4 months जाएगा। सो स्टिल हमारा 1/3 बैच भी नहीं कंप्लीट हुआ है, 1/4 हुआ है, 25%। तो Yes. जर्नी इज बिग जर्नी, बट आपने अभी तक बहुत अच्छे से किया हुआ है। एंड आई थिंक कि आपने नोटबुक इज ऑल्सो मेंटेन प्रॉपरली मेरे हिसाब से। Yes, sir. Yes, sir. है. यस, हाउ मेनी पेजेस कंप्लीटेड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तक अभी तक जो आपने किया फेयर, उसमें Sir, पेज नंबर 100 लिखे and, आपने? yes, sir, 120 something. 120। अन्य आपके कितने हैं? सर मैं नहीं डालती पेज नंबर। तो डालो ना पेज नंबर बेटा। लास्ट में अपने को डायरेक्टली वो क्वेश्चन पे आना होगा, तो इट विल बी इजी फॉर यू। डालो एक बार पेज नंबर। थोड़ा यस सर। सिस्टमेटिक स्टडी कीजिए बेटा। ईशा, पेज नंबर? So 135. 135। ओके, गुड। चलिए ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन 5 बेटा। Yes, हाँ, sir. स्टार्ट। ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू 40 रुपीज। सो हाउ मेनी नंबर? Sir, 2 lakh. 2 lakhs इज अ नंबर। ओके, 100 Yes, sir. रुपीज गया तो 2 lakhs इज अ नंबर। इंटू 40 मीन्स 80 lakh. 80 lakhs. So entry will be equity share capital face value 100, 2 2 equity, crores. 2 2, crores, 2 equity share capital account 80 lakh, 2 capital reduction account 1 crore 20 lakh. okay. Next one. All preference shares are reduced to rupees 60 each. So the Hmm. number of preference shares is 1 lakh. एक ही सेकंड ना बेटा, एक ही सेकंड। Yes, sir. एक ही मिनट है बेटा। Yes, sir. ओ, अरे मॉड्यूल ना नंबर जो मॉड्यूल के नंबर्स करेक्ट है भाई, आपने क्वेश्चंस के नंबर गलत हो गए। वो एक बार फाइल चेक कर लेना। ये 1 इधर बराबर है, पर इधर का क्वेश्चन का जो 1 है ना वो गलत हुआ है, और ये बराबर है। फिर ये मैंने खाली पीली चेंज किया। आपने कर लिए क्या पूरे? मॉड्यूल का नंबरिंग देखो। नहीं पता मुझे, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। ये मॉड्यूल का 1 होगा तो इधर भी 1 रखो, एक बार वो देख लीजिए। हाँ बेटा, तो ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का, यस, फर्स्ट एंट्री करेक्ट है। प्रेफरेंस Yes. शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मेनी प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर? 1 lakh. 1 lakh, तो 1 lakh इंटू इट इज रिड्यूस टू 60 rupees each, which is 60 lakh. 60 lakhs. So 1 crore to preference share capital 60 to capital Lakh. reduction Reduction 40, 40 lakh. correct? बहुत ही Yes, sir. easy question है। The rate of interest on debenture increased to 6%. Okay, the debenture holders surrender their existing debentures and exchange for fresh debentures for rupees 70. तो Yes. नंबर क्या है बेटा डिबेंचर्स का? 80,000. 80,000। तो 5% डिबेंचर्स 80 lakhs, to 6% डिबेंचर 56 lakhs। Yes, sir. And to
capital reduction Reduction. 24 lakhs. Yes, sir. Property and equipments reduced down by 20%. Capital reduction account debit 50 lakh to Plant property and plant machinery. equipment 50 lakh. Yes. Next, capital reduction to current asset 90 lakhs का है वो तो 1 फर्स्ट lakh 10,000 का हाँ रिडक्शन. 20 lakhs का 1 lakh का रिडक्शन. मार्केट वैल्यू 1 लाख है. ओके 1 लाख से रिड्यूस होगा. 19 lakhs का Yes. 20 lakhs का 19 lakhs will be there. One of the creditor took some of the patent who no, to whom the company owes 40 lakhs decides to forgo 40% of his claim. तो creditors account debit and 40 lakh to capital reduction. we are allotting equity shares to him of 24 lakhs. Yes, sir. Yes. The taxation liability provision for tax is 2 lakhs. So provision for tax account debit, capital reduction account debit to bank Yes, sir. और टू करंट एसेट. अभी यहाँ पे टू लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन एंड इसी प्रोविजन को लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया एंड लाइबिलिटी टू बैंक के बदले में लाइबिलिटी टू करंट एसेट बिकॉज हियर देयर इज नो बैंक बैलेंस. Okay, sir. तो टू करंट एसेट क्यों समझ में आया ना बिट बिकॉज देयर इज नो बैंक बैलेंस एंड बैंक बैलेंस इज इट्स नॉट रिटर्न सेपरेटली इट्स अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स. Yes, sir. Yes, sir. And then capital reduction to P&L and whatever balance is there in capital reduction you will transfer it to capital reserve. Capital reserve. Yes, Easy? sir. Yes, sir. बहुत easy था. So only the difference is that provision is converted into liability. Liability. So ये एक नया point था. तो you can write IMP over there. Provision is converted into liability and then liability to current assets. Yes, sir. ये कर लोगे आप. बहुत ही easy था. 6 नंबर. तो मेरे हिसाब से ठीक है एज अ प्रैक्टिस कर लेना पर देखता हूँ मैं और कोई. 6 7 8 इज लास्ट ना. 7 8 है ना. 7 तो हो गया ना हमारा. Yes, sir. 7th हो गया. एंड व्हाट अबाउट 8 कंप्लीटेड. Yes, sir. एंड टीवाई के क्वेश्चंस. सर TY के क्वेश्चंस क्लास में हमने 10th वाला किया था. बाकी 10th किया Yes, sir. और एक भी किया था शायद से. ये तो सेम ही है शायद से. ओनली फिगर्स आर डबल. ये जो है देखो 11 नंबर इज सेम. अब भी जो किया वही है. Yes, sir. कौन सा आवाज है ये. Yes, sir. Almost. बड़ा तन्मय माइक प्रॉब्लम शायद से. Yes, sir. हाँ अभी गया. कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था. सर वो एयरप्लेन की आवाज आती है बीच में. ओह अच्छा. अगर घर के ऊपर से जाता है क्या इतना. सर पास में एयरफोर्स स्टेशन है तो. ओके. अच्छा आई वांट यू टू कंप्लीट दिस. 10 नंबर तो हमने कंप्लीट किया था. करेक्ट है. यस सर. यस सर. ठीक है ठीक है ठीक है. चलो ओके नो प्रॉब्लम. मुझे ये एडजस्टमेंट देखने दो. 8 वी हैव कंप्लीटेड. 6 था. हाँ 6 में हैव यू कंप्लीटेड 6. यस सर. डिफिकल्ट इजी. सर इजी है. कोई तो डिफिकल्ट एडजस्टमेंट दो भाई. एक हाथ तो डिफिकल्ट होगा. सर इस चैप्टर में ज्यादा नहीं है. TY के भी सारे सॉल्व किए तो उसमें भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट्स नहीं थे. चलो एक काम करो. 6 नंबर आई विल नॉट डिस्कस. आप स्टार्ट टू एंड टिक जी टेक्निक करके यूज करो. चलो. ओके सर. यस एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन by using टिक टेक्निक. टुडे इज लाइक होमवर्क डे. वी आर डिस्कसिंग इट इन द क्लास. तो आज का तो सिर्फ यूर एक्टिविटी इज देयर. माई एक्टिविटी विल बी 0 टुडे. जस्ट वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड
taking your practice. Okay. So yes, I don't have any difficult adjustment. So, but in next session, yes, but obvious, we will have some past examination questions ka practice. So please do all questions carefully. Okay, past examination in 2 days, you have to finish all these questions. How many questions are there? अन्य कितना दिया है बेटा? कितने questions है तन्मय? Past examination So कितने? 15. 15. ओके, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। आज 15 क्वेश्चन है तो माइट बी इज वेरी डिफिकल्ट। एक आज 7 कीजिए, कल 7 कीजिए। एंड डो नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑन रफ पेजेस, भी सॉल्व कर सकते हो इफ सिमिलर क्वेश्चन इज देयर। एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन देन ओनली सॉल्व इट। ओके, बाकी रफ में करो, टिक जी का मत यूज करना, सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, तो दैट विल डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, चलो, यूज दिस एज अ प्रैक्टिस सेशन। इलस्ट्रेशन 6 एवरीवन हैज टू सॉल्व। 30 मिनट्स है आपके पास। जनरल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैक्सिमम टाइम अलॉटेड इज 30 मिनट्स। चलो स्टार्ट। प्रैक्टिस, एवरीवन हैज टू डू दिस प्रैक्टिस, एवरीवन। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस प्रैक्टिस सेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आंसर दूंगा तो इट विल नॉट टेक टाइम, बट वेन यू आर राइटिंग यू विल अंडरस्टैंड सम मिस्टेक्स वी आर डूइंग इट, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलो स्टार्ट।
हो गया क्या? अरे वाह, वेरी गुड। पलक बेटा, यस सर। कितना टाइम लगा? सर 30 मिनट्स लग गए। 30 मिनट्स? 30 मिनट्स लगा क्या? यस सर। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिफ्थ नंबर भी कर लीजिए। मतलब 3 क्वेश्चंस आज के दिन के हो जाएंगे तो अपना टॉपिक भी खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस करके। तो एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन। आज आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। So now last question of the day, fifth number, and then we'll discuss. First, we'll discuss TYK 1 2, TYK 1 2, and then our all questions are getting completed. TYK, I think 5 6. I don't know exactly the number. And then last illustration hai. Yes. Palak, Palak beta, यस सर। read कीजिए और explain कीजिए this question one by ओके सर। one. Park Limited had laid down the following terms upon the section of the reconstruction plan by the court. Furnitures and fixtures which stood at the books at 1,50,000 to be written down to 95,000. The freehold premises which was valued at rupees 7 lakh showed at appreciation of rupees 55,000. Second, plant and machinery showed fall in value of 89,000 to be recorded in the books. Investment at 2 lakh was brought down to the existing market value at 1,05,000. Third one, debenture holders accepted to receive the following in lieu of their present 9% debentures of rupees 2,50,000. 1/5 of the total to be paid in cash to them, to take over the land and building of value rupees 72,000, to forego the remaining unpaid portion as the policy of the reconstruction, right of the profit and loss account debit. सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Entry. Okay, sir. Right of Okay. the profit and loss account debit balance at rupees 70,000, which had been accumulated over the years. In case of any shortfall, the balance of the general reserve of rupees 1,50,000 can be utilized to write off the losses under reconstruction scheme. Show the necessary general entries as a part of the reconstruction process, considering that balance in general reserves utilized to write off the losses as per reconstruction scheme. Entries बोले ना बेटा one by one. Okay, sir. First entry, furniture and picture. देखो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी एक बार वापस से बताइए। Furniture and fixtures which stood at the books 1,52,000 written down to 95. Value down हुई है furniture fixtures की 150 to 95 हुआ। एक मिनट हाँ बेटा। Okay sir. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, करेक्ट? Yes sir. Furniture and fixtures account 55,000. And freehold premises to capital reduction 55,000. We will pass separate entries. Okay sir. Next I gives me the freehold premises which was valued at 7 lakh shows an appreciation. The freehold reconstruction account debit to
sorry, freehold premises account debit to capital reduction 55,000. Next is capital reduction account debit to plant and machinery account 89,000 से. फिर reconstruction account debit to investment 95,000. Okay, Third one है, हाँ जी, very good. ये IMP है. okay sir. Debentures sold or accepted receipt of one fifth of the total to be paid in cash. तो इसमें आएगा 9% debentures account debit to bank आएगा सबसे पर, तो 2,50,000 का 1/5 पार्ट लेंगे सर, 50,000. और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए जाएगा इसका, देख 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000. हाँ जी सर, टू कैश, हाउ मच कैश वी आर पेइंग? 1/5 देना है, 1/5, तो 50,000. ओके सर. टू लैंड एंड बिल्डिंग 72,000. And the two for Balancing figure, yes, capital very good. reduction. Then capital reduction, The debit balance, हाँ, right of the profit and loss account debit balance of 70,000 which है, तो वो capital reduction account debit to P&L में जाएगा सर. okay. And general reserve to capital reduction, correct? हाँ जी, yes yes. So balance will be 1,26,000. Okay, how this 1,26,000? If you give debit and credit, you will get the answer. Yes sir, yes sir. 1,26,000 and 1,50,000 is the balance available, correct? Okay. Yes sir, yes sir. Yes. Nine number. पलक 9 नंबर भी डिस्कस कर लेते बेटा. Okay sir, okay sir. The following schemes of the reconstruction has been तो ठीक है, मैं 9 नंबर किसी और से पूछता हूँ बेटा फिर. Okay sir. मीनू बेटा 9 नंबर. Okay, sir. The shareholder to receive lieu in present holding at 1 lakh share of 10 each. तो बैंक अकाउंट, सॉरी, शेयर होल्डर टू बैंक. है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. इक्विटी शेयर सर, उसको दिया ना. तो शेयर होल्डर ऐसा कोई अकाउंट होता है बेटा इन बैलेंस शीट? नो नो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक. हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10. यस सर, टू बैंक. 10 lakhs, 1 lakh into 10 lakhs. हाँ, बैंक कहाँ से आया बेटा? आप क्या पीछे वो था, एडजस्टमेंट था, मैंने देखा नहीं, बुक्स को टर्न किया तो. न्यू फुल्ली पेड 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 3/5 होल्डिंग. So 6 lakhs, 3/5 means 10 lakhs का 3/5. यस सर. Correct? To preference share capital, 1/5 of the above new equity shares. 1/5 of means this is 6 lakhs. ये 1/5 of 6 lakhs. 12,000. 1,20,000. 1,20,000. And then to debenture 40,000. And remaining is to capital reduction. मुझे तो Yes. नहीं लगता ये एडजस्टमेंट आपने बराबर बोला. सर मैं बोल नहीं पाती ठीक से, बट मैं करती हूँ तो हो जाता है मुझसे. An issue of 1 lakh 10% debentures was made and allotted. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% debentures. इशू किया, ओके. And capital reduction to goodwill, to plant and machinery, to freehold property. Okay? Very Yes, sir. simple question. कुछ था ही नहीं इसमें तो. हाँ, 10 sir, number I we completed. 11 number same है. And 12 number is also very simple. So you do one thing. TYK 12 ये using टिक जी start to end solve कीजिए. And today is ये we will check it at after 30 minutes. I want कि everyone will answer the balance sheet. Okay. So this is last practice question. 12 number directly you have to solve. ठीक है? Okay. चलो start solving. आज का सेशन पूरा प्रैक्टिस में ही गया है. I know that. Yes, any difficulty? 1 minute. Any difficulty that you are facing? Remove your hands. Any difficulty? Anything that you want to ask me?
No difficulty. So I will ask you some questions now. Yes. Yes. Apart from internal reconstruction, if you have any doubt, you can ask me about study also. Yes, sir. My doubt is for the exam point of view, Okay. we are passing journal entries without narration. Is this okay, sir? Or Narration is very narration? simple, beta. You can write it in one line. Okay, that equity share capital, being equity share capital is reduced, being equity share capital is issue of debentures to the equity shareholder. So it's very simple. So you can write it So, in one line. If nothing is mentioned, then you have to write one line narration. Okay. yes, simple and crispy Ha, narration is enough. yes, very Yes, simple sir. narration. You can write narration. No one will, deduct your marks due to narration. Okay, sir. Okay. So if nothing is mentioned, write one line narration. Okay. Yes, sir. Yes. Thank you, Other sir. than that, any difficulty you are facing in accounts? No, sir. I need to practice more and more, sir. See, beta, practice, you don't have to do means maximum practice. What is the problem normally students are facing? They are not able to understand difficult adjustments. Okay. So for that, what you can do, first you do these questions orally, not by solving every question. So first you must have grip over study material questions and then go for the only difficult questions of the past examination. Means you solve every question of past examination and note down that this question I have to solve at the time of revision. So Yes, your sir. revision plan, it is not, you should not be overconfident like India in yesterday's match. What happened yesterday, you know that. Have you seen that match? No, sir. I am You not know that interested we to lost cricket that match. match I'm not interested to watch in cricket cricket. match. Okay, yesterday same thing happened. Everyone was confident, overconfident. Yes, we will easily win the match. And yesterday our batting is totally collapsed. Reason is very simple: overconfidence. So Maithili, South Africa, they prepared well. They know each and every batsman's strategy, bowling strategy, and they won the match. So that revision is very important. What I want to tell you, why revision? Because whenever you are doing some, everyone is practicing, but the problem is that at the time of execution, it is very difficult. So what you have to do, your revision plans, you must prepare at the time of solving illustration. This illustration I have to solve at the end. So will give me the clear idea. And this is going to happen that you will, after certain time, you are not able to recall anything. And this is very natural process. Okay. Ki, sir, I studied, but I'm not able to recall all these points properly. So at that time, that one question will give you all, you can easily recall all points after solving that one illustration. And that illustration you have to mark it now only. Understood? Yes, sir. So this is your revision strategy. Yes, Virashri. Virashri. Yes, Diksha. Sir, Virashri. Yes. sir, I have a small doubt in the first adjustment of illustration 6. Which illustration? 6, sir. Okay. What is your doubt? Preference shareholders would give up 30% of their capital in exchange for 11% debentures, it is told. So, only for that give up amount, they are issuing 11% debentures. Right, sir? Preference shares what? Preference shareholders would give up 30% of their capital in Huh. exchange of issue of 11% debentures. Huh. So So, 30% is capital reduction and 11% is debentures. sir, but only for the amount that they've given up, they would issue debentures, right, sir? No, debenture holders can get preference shares, no? Or preference shareholders can get debentures. No, I don't. I'm not getting your query. Sir, they've told that they've given up 30% of their
capital preference shareholders. Okay, so 6 lakhs is a capital. They gave up 30%, so 1,80,000. I'm asking you that 1,80,000 should be the 11% debentures, right? No. How? I can't understand that. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. They forgo 30%, no? Yes, sir. Okay, forgo means what? They will not take 30%. So that is your profit. Would give up. Give up means what? They won't take 30%. And remaining, they will take it in the exchange in 11% debentures. So this is very simple English. 30% give up means what? We don't have to pay that 30%. Okay, sir. So remaining amount they'll take for. And the remaining amount in exchange for 70%, they are getting 11% debentures. Okay, sir. Okay. Okay. Sir, I also have another doubt. Yes. When we are solving a particular sum, ideally, how much time can we take to solve it? Balance sheet and journal entries maximum 30 minutes to 35 minutes. Why? Okay. You are taking Yes, more sir. time? Yes, sir. I don't know for how much time should we take to solve a sum. Maximum 35 minutes. If you are clear in your concepts are clear? Yes, sir. As I'm solving sums, my concepts are getting cleared, but it's taking a lot of time to solve. No. In starting, see, some foundation students are there. They already know how much time it takes in foundation. They clear their foundation due to the structure of the course. They know already how much time we should spend on one question. But the problem is of direct entry students. They are not exactly aware about this, how to solve the question. Therefore, we have to do maximum practice of all these questions. And see, if you are taking 1 hour in starting, it's okay. Everyone does not have the same capacity. Some students might solve this question in 40 minutes. Some students might be in 25 minutes. So every student has different ability, but it will take some time to improve your speed. So don't worry about that speed. Okay. So after practicing 5-6 questions, automatically your speed will get increased. Okay. And okay, sir. your taking will be shorter than whatever you did it for the first time. So continuous basis pe you have to do these things. Okay, sir. Okay. Don't worry. And Okay, it is sir. very normal that you are taking more than 45 minutes, 1 hour for the first time. Yeah, Okay. okay, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, Diksha beta. Sir, I have a doubt in financial statements. Hmm. So 1 minute. Yes. Sir, in illustration 4 and PYQ2, we have given the preliminary expenses, right? And in PYQ2, in illustration 4, we deducted from the, I think, Reserves and surplus. That is study reserve. material process you have to follow. Okay. Okay. Preliminary expenses has to be deducted from reserves and surplus. Reason is very simple. I will tell you this in AS26. There is only one expenditure which is allowed to defer, that is development expenditure. एक ही expenditure है जो हम लोग asset side पे नहीं पर defer कर सकते हैं. Okay. और वो expenditure का नाम है development expenditure. And Intangible asset under development जो हम लोग बोलते हैं ना. Okay. हाँ, तो वही एक एक्सपेंडिचर अलाउड है जो डेफर कर सकते हैं. बाकी एक्सपेंडिचर आपको पीएनएल में डालने चाहिए. एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इट इन पीएनएल बिकॉज दैट ईयर का पीएनएल इज ऑलरेडी क्लोज्ड, तो नाउ यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम द रिजर्व्स एंड सरप्लस. Okay. Got it? And dividend payment is also my doubt that See, before 2021-22, we are showing it as a liability. But okay, after sir. introduction of S4 revised, after Ind AS, dividend has to be shown as the footnote. If it is declared. If it is Declared. and if it is already declared before 31st March, that will be current liability, no? Yes, sir. तो जो 31st मार्च के पहले डिक्लेयर हो चुका है तो करंट लाइबिलिटी, और जो 31st मार्च के बाद डिक्लेयर होने वाला है तो वो फुटनोट में लिख के छोड़ देना है. तो इट माइट हैपन कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस में
dividend might be, if you download the answer, तो it might be कि Yes, वहां पे sir. dividend is shown as a other current liability, but don't worry. तो वो नहीं, तो एक काम करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आफ्टर 2022 के क्वेश्चंस ही सॉल्व करो. Okay, sir. ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बट जो भी एडजस्टमेंट है, सी तब अमेंडमेंट नहीं था, तो Okay, आप sir. कंफ्यूज मत होना कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही मेरा आंसर होना चाहिए. नो, नाउ वी हैव अपडेटेड, नहीं तो आपको डाउट्स होंगे इन दैट चैप्टर, तो इट्स बेटर टू सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर 2022. Okay, sir. सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखो पुरानी, एक हाथ दो, डिविडेंड के एडजस्टमेंट मत देखना. सर कितना टाइम लगना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मार्क्स बायबैक और मार्क्स पास्ट इंटर? एग्जामिनेशन के दिए क्या मैंने आपको? हाँ जी. मार्क्स दिए क्या मैंने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के, क्या नहीं दिए? मार्क्स? हाँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है दिया है क्या मैंने वो क्वेश्चन शीट पे? यस सर. हाँ, तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मिनट्स. 1.8 मिनट. हाँ, ओके तो सर. उतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए. ओके. ओके सर. यस, यस सुष्मिता. Sir, just had a question from exam point of view. So, are we allowed to write on the question paper in the exam hall? By pencil you can write it and tell your examiner that I will erase it after solving. Don't worry, we are CS Oh, students, we hmm. are not doing any copy. Okay, so if you Okay. explain them properly, so they can allow. Okay. Okay, Even on and MCQ papers also. yes, yes, Question yes. papers. Because MCQ that was paper, means you can write it on the last page, no? In case of MCQ paper, on rough, you can write rough on your answer sheet, and then you can write on that. okay. Okay. And sir, just a request. Can we get even this solution file also, where we are solving the illustrations, right? And we have You can download it from the Google, no? If you put the year, and you will get that. okay. I will Like try. I will give okay. you a solution also. But Hmm. suppose, and otherwise we'll discuss it in the class, no? Answers, or someone will give, help you. That he can put it on the group, no? He or she. Okay. Okay. Okay, so we'll tell them to put it in the group in our on our Telegram channel. So it will Okay. help you out. Okay. Okay, sir. And we're Yes. supposed to write in black pen in exam, right? Mandatory. Okay. Because black pen, for scanning it is very easy. Okay. Okay, Okay, so sir. we are forced to use black pen. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Yes, Harishal Patil. Aditya, Good morning, sir. good morning. Sir, case scenario based question आएगा तो confuse होगा, confuse. Based scenario questions, we will take it in the revision classes. Okay, okay. Okay, we And have two, one 3 days for case scenario based question. Huh? okay, okay. One clarification, sir. What is uncalled capital and called capital, sir? It is confusing on that. What is Uncalled capital and called up capital. uncalled capital? Means now suppose one share is of rupees 10. Okay, and out of that you called only 6 rupees. Okay, so Yes, 4 rupees is yes, sir. uncalled. It will be called at the time of liquidation, or might be when we are in the need of the funds. So Okay, 4 rupees is 6 rupees is called and paid up, and 4 rupees is uncalled. okay, okay. Sir, one more question. Balance sheet vertical format shows how we solve that question, sir. Vertical balance sheet mandatory. Vertical. Horizontal, it shows. Not allowed as per schedule 3. Horizontal is not allowed. It is allowed only in your post graduation course, but you have to write it in the vertical form only. In examination, vertical. If they shows Mandatory, in horizontal. Aditya. No, horizontal is not allowed at all. On very first day I told you, no, that's why I started with the financial statement, how to prepare balance sheet.
Okay. T format, sir. T format. T format. T format is not allowed. Vertical is only allowed. Sir, one question is that if they shows in T format in balance Though sheet. in the question it is T format, you have to change it in the vertical format. Okay, okay. Vertical format we have Mandatory. to change. Yes. Okay, okay. Yes, sir. Though Thank in you. question it is in T format, but in answer you have to write it in the vertical format. We have to change that format. Yes, yes, yes. Yes, sir. Thank you, sir. हेलो। हाँ, बोलिए हर्षल। हाँ सर, जैसे आपने प्रीवियसली मुझे डांटा था, सो आई एम प्रिपेयर्ड वेल एंड आई डू अ बायबैक वेरी वेल एंड आई आल्सो सॉल्व द PYQ, TYQ and illustration of all of the buyback chapter. So And are you sir, finding it simple or difficult? sir, simple, now simple. Okay. So Due to keep it up. the maximum practice for that, especially Yes. क्या होता है बेटा, लास्ट में आप 4 मंथ्स क्या पढ़ाई करते हो ना, वो मायने नहीं रखता है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। ओके। और लास्ट के 2-3 महीने सिर्फ रिवीजन करना होता है। एंड सी कोर्स इतना लेंदी है, आई कैन अंडरस्टैंड योर मेंटल प्रेशर, इतना ही लेंदी, बट इफ वी आर वेरी पंक्चुअल एंड सिस्टमेटिक, तो ये कोर्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू नो, कि स्टूडेंट्स को है ना, हम लोग कोई भी चीज कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, और जो कंसिस्टेंसी करता है वही विनर होता है। इवन आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल। ऐसा बहुत बार मोड आता था मेरे लाइफ में कि जब मैं सीए कर रहा था तो सीए छोड़ देना चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा है, पर उसी टाइम पे बेटा आपको खींचना रहता है थोड़ा सा। और मेरे रीजंस ऑफ फेल्यूर, मुझे पता है कि मैं कुछ चीजों में बहुत ज्यादा घुस जाता था, अननेसेसरी थिंकिंग करते बैठता था, जहां पे 10 मिनट का काम है मैं 40 मिनट्स लेता था। तो दीज आर दी सम रीजंस, बट दैट रीजंस इज हेल्पिंग मी नाउ। तो कोई भी फेल्योर से मुझे, अभी देखो मैंने तब कुछ चीजें सोची होगी, तब मेरा दोस्त 30 मिनट्स में वो काम कर रहा था, मुझे 2 घंटा लग रहा था, पर 2 आवर्स लगने का फायदा मुझे अब भी हो रहा है, बिकॉज एवरीथिंग आई एम डूइंग इट नाउ लॉजिकली। मैंने किधर भी शॉर्टकट मेरे लाइफ में मारे नहीं थे। इवन एफएम का एक हाथ फॉर्मूला होगा या कॉस्टिंग का एक हाथ फॉर्मूला होगा ना, मैं उसके पीछे लगता था कि ये क्यों आया। इनकम टैक्स में मैं खुद को ये पूछता था कि ये सेक्शन क्यों आया, वाई दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस। तो ये मुझे आदत थी 12-13 घंटे पढ़ाई करने की, एक जगह पे बैठने की। और वो कोई कोई दोस्त मेरे बोलते थे, अरे ये क्या तू इतना क्यों जा रहा है, जो दिया है वही कर ले। पर आज मुझे उसका फायदा हो रहा है कि एवरीथिंग आई एम डूइंग, आई डिड इट लॉजिकली। तो आज मुझे सिखाते टाइम भी ऐसा मैं डायरेक्टली कुछ चीजें आपको सिखा ही नहीं, एवरीथिंग ऐसा मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, हर बैलेंस से पढ़ाया हुआ है। तो आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि वो जो लास्ट के 3 महीने जो पढ़ाई करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल रहता है उनको पास होने के लिए। मतलब उसमें से भी लक फैक्टर होगा तो पास हो ही जाओगे। अभी आपकी मेमोरी अच्छी है और जो आपने पढ़ा था वही एग्जाम में आया, पर वो रेयर पॉसिबिलिटीज है। ओके। तो वो चीजों पे ध्यान रखो। और डांटना ऐसा मेरा कुछ ये नहीं रहता है, आप लोगों ने प्रॉपर वे पे, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, रोज क्लास को आ रहे हो, तो यू ऑल्सो वांट समथिंग इन रिटर्न। तो वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम का। ओके। सर, आपने जो थिंग बोली थी कि जैसे फोकस्ड रहना, जैसे आपने जैसा आपका एग्जांपल दिया था फॉर कि मेरा क्लास और मेरे कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट in the class. So same मैंने follow किया. Then I cleared all financial statement, buybacks, and now I on a reconstruction. Also I completed work of it after before day. PY के 10 तक मैंने solve किया है. कितने और घंटे 12 पढ़ाई करते हो आप? सर मैं 7-8 hours in a day. ठीक, गुड। अभी और एंड व्हेन इज योर एग्जाम, सितंबर या जनवरी? September attempt sir. सितंबर एग्जाम है, तो एंड यू आर डूइंग 8 hours a day apart from classes or including classes? Apart from classes I think. हाँ, तो फिर ठीक है। और क्लासेस कितने घंटे चलते हैं आपके? सर मैं वन ग्रुप ही ऑप्ट कर रहा हूँ अभी. हाँ। एंड सर मेरा डाउट था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसमें अगर मैंने फॉर्मेट जैसे अभी बैलेंस शीट का हो आफ्टर रिड्यूस्ड और इसके पहले जर्नल एंट्रीज का अगर मैंने ड्रॉ भी नहीं किया, सिर्फ जस्ट राइट डाउन किया पर्टिकुलर्स, कॉलम हेड्स एंड देन एंट्रीज, देखो कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी एक दोस्त था, उसका हैंडराइटिंग इतना
मोती जैसा था कि वो कैसे भी लिखेगा तो भी एक लाइन में आता था। अभी मेरा हैंडराइटिंग है, आप देखोगे तो मेरा टेढ़ा हो जाता है, किधर भी चला जाता है, तो मेरा हैंडराइटिंग इज नॉट क्लीन। तो मैं फिर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा रखता था कि सामने वाला एटलीस्ट लाइंस ड्रॉ किए होंगे तो हाँ भाई सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, एक इंप्रेशन पड़ता है वो आदमी का पेपर देखो आप उससे साथ कनेक्ट नहीं हो, उसको आपका टैलेंट नहीं पता है, तो उसको आपको कनेक्ट करने के लिए एक ही होता है आपका क्लीनलीनेस। उसको भी ऐसा फेल करते टाइम 4 बार सोचना चाहिए। आया समझ में? तो थोड़ा क्लीन रखा तो अच्छा है। ड्रॉ यदि आपको टाइम नहीं मिलता है तो नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, डोंट वरी। Sir, actually, this helped to me time gain, which you said 30 minutes for the particular questions and a 35 for a standard, I think. Standard time Hardly to it be. takes 1 and 2 minutes. After writing this you can draw very easily, no? Or before writing hardly 2 minutes it takes, but it gives a proper impression to the examiner. Okay, sir, योर understood. चॉइस, आई वोंट टेल कि यस नो डोंट ड्रॉ दैट। इट्स माई कि मेरा पेपर मैं इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता था, फिर मेरा पेपर 70 मार्क्स का भी कंप्लीट हुआ तो भी वो फेल, मैं उसके साथ मेंटेलिटी से खेलने की कोशिश करता था कि उसको फेल करते टाइम भी 4 बार जो मुझे आता है ना मैं वही एक्सप्रेस करता था। मैंने कभी पेपर को ब्लैंक नहीं रखा। मैंने बहुत से पेपर जब चेक किए आप लोगों मतलब मॉक टेस्ट वगैरह चेक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेनी स्टूडेंट्स कि वो ब्लैंक रखते हैं। अरे ब्लैंक व्हाट इट शोज, वो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो पेपर में, ये दिखाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, फिर वो आपको फेल करेगा। आप उसको वो बताइए मत ना कि जो आपको नहीं आ रहा है। आया समझ में? तो कुछ इंप्रेस करने के तरीके हैं कि कुछ ब्लैंक ना रखना, कुछ ड्रॉ करना, तो ये चीजों से उसको भी अच्छा लगता है, अरे भाई इसको सब आ रहा है, तो मैं इसको लास्ट के क्वेश्चन नहीं भी आते रहेंगे तो भी वो आपको पास कर देगा। Okay. Due to the presentation of. गुड प्रेजेंटेशन रखो, ट्राई टू Okay. मेंटेन। Thank you, sir. Thank you for motivating. यस यस निशा। Sir, where I can get all PYQs question in one book? You told. अच्छा, फॉर दैट टुडे डू डोंट Yes. कॉल ऑन दैट नंबर। एक नंबर है 7887878740, उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए, यू विल गेट So, दैट। please ओके, again tell number. 7887878740, 787. 7887878740, तो विल गेट दैट बुक। Okay, sir. यस Oh. यस श्रीधर। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिटर्न ऑफ कर सकते क्या इसमें मतलब रिकंस्ट्रक्शन में? नो 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 नो, नॉट अलाउड। If it is specifically mentioned, then you can do that. Otherwise, it is not allowed. ओके सर। सर और कैश फ्लो See, स्टेटमेंट security में। premium is not the free reserve. I mean, it is not the free reserve. You cannot write it off. Okay. ओके सर। हाँ, सर और एक डाउट था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो मीन्स हम वो डायग्राम निकालते हैं, वो एग्जाम में अलाउड है क्या सर वो? क्यों नहीं अलाउड? डायग्राम सर तो नहीं। अंडरस्टैंडिंग पर्पस करते हैं ना हम लोग। हाँ सर, लेकिन उससे वजह वो डायग्राम नहीं किए तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने को बहुत टाइम लग रहा सर। डायग्राम बोले तो कौन सा डायग्राम बोल रहे हो आप? सर वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और वो फाइनेंसिंग ओपन वो क्लासिफाई करती है वो। ये OIF जो ऐसे में लिखता हूँ वो? हाँ हाँ वो सर। नहीं नहीं नहीं, वैसा अलाउ ही नहीं है, कंपलसरी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। टाइम लगता है तो प्रैक्टिस करो, सेव योर टाइम। 30 मिनट एक एक टाइम तो आएगा ना कि वो सेम क्वेश्चन 30 मिनट्स में आपने सॉल्व कर लिया। टाइम तो लगेगा ही बाबा, ये तो इजी थोड़ी है इतना। ठीक है। नहीं, क्योंकि यस, सब क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने कैश फ्लो के, लेकिन वो टाइम कम ही नहीं नहीं हो इट्स रहा ओके, मीन्स मैंने चलने अभी लगा। उनको बताया कि आप टाइमिंग स्लोली स्लोली श्रीधर आपका कम होगा। इट्स नॉट लाइक कि आपका पहले इसमें होगा। इफ यू डू इट फॉर 2-3 टाइम्स देन यू कैन सेव दैट टाइम। ओके सर। ओके, तो थोड़ा टाइम जाएगा बेटा। ओके सर। यस, अर्पिता बोलिए। सर मुझे ना इलस्ट्रेशन 6 में डाउट है थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जो कि फोर्थ एंट्री है ना सर, जो इन्वेस्टमेंट वाली, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस्ड टू मार्केट प्राइस, हाँ, तो ये मार्केट प्राइस हमें इज 68,000, 55,000 इज द मार्केट प्राइस, तो 13,000 से कम हुआ ये। हाँ जी। सो सर हमें जनरल एंट्री में दिखाना होगा या फिर हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही शो कर नहीं, सकते जर्नल हैं? एंट्री थ्रू। व्हाई बैलेंस शीट में कैसे? इफ यू आर चेंजिंग अ स्मॉल अमाउंट देन जर्नल एंट्री विल बी रिफ्लेक्टेड, नो? ओके।
और कैपिटल ओके रिडक्शन तो अकाउंट मैं फिर कैसे आपका चेंज हो जाएगा ना पूरा? नहीं, जैसे पता है मैंने क्या किया, मैंने ना इसकी सेपरेट एंट्री करी जनरल एंट्री में, और जैसे मैं इसको जब टैली कर रही थी तो मैंने बुक में मैच आउट किया, मेरे को अलग साथ में मिली थी ये एंट्री जो पीएनएल की होती है, एंट्री कैपिटल रिडक्शन पीएनएल वाली, अच्छा, उसके उधर। साथ। ओके ओके, नहीं नहीं, आईसीआई का आप ये मत देखिए सीक्वेंस। आप आपका मैं इसीलिए देखो आपको नंबर भी मैच करके देता हूँ, रोमन 1 रोमन 1 रोमन 2 रोमन 2। मैं नंबर भी मैच करके देता हूँ आपको, यदि आपने जी सर। ऑब्जर्व किया होगा तो। आई एम वेरी कंसर्न फॉर दैट यस सर। नंबरिंग ऑल्सो। मटेरियल यस में सर। माइट बी दे पास्ट ओनली वन एंट्री, कंबाइन एंट्री, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग बाय योर ओन यू कैन पास सेपरेट सेपरेट एंट्रीज। सेपरेट। यस। ओके सर, वही कंफर्म करना था सर, थैंक यू। यस रितु। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर बोलिए, गुड मुझे मॉर्निंग। ना बायबैक में ना जो ये होता ना बोनस शेयर। बोनस। हाँ बोनस शेयर होता सर, मुझे उसे निकालने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा। बोनस शेयर्स हाँ जी हाँ जी। कौन से टॉपिक में? सर ये मैंने जो वो दे रखे ना अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो सोल्व किए। बोनस शेयर्स तो 5:2, 5 शेयर्स फॉर 2 शेयर्स, फॉर ऐसा बोलने का 5 शेयर्स दिए 2 शेयर्स को, एंड 2 शेयर्स 2:5 होगा, तो 2 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स, बीच में सर फॉर लगा देने का। सर एक मिनट, ये मतलब इस मतलब ये जो मेरी इशू है इसको बताना सर। 3 fully paid up equity share of ₹20 each by way of bonus share for every 15 equity share held by equity तो shareholder. 15 शेयर्स को कितने शेयर्स दिए? 15 shareholder, 20 हाँ, each. नहीं नहीं, कितने 3 शेयर्स full, दिए? 3 fully paid up. 3 शेयर्स दिए 15 शेयर्स को। हाँ जी। अभी कोई बैलेंस शीट में कितने शेयर्स है? बैलेंस शीट में 20 शेयर है सर। नहीं नहीं नहीं, 20 कैसे होंगे? 20,000 या ऐसा कुछ होगा ना सर बैलेंस शीट में। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख है सर। 50 lakhs, और एक शेयर की प्राइस कितनी है फेस वैल्यू? 20 50 lakhs डिवाइड बाई 20, तो आपके नंबर ऑफ शेयर है 2,50,000। हाँ जी सर। करेक्ट। हाँ जी हाँ तो जी। 15 शेयर को 3 शेयर, तो 2,50,000 को कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 के नीचे 2.5 लाख लिख दिया, ओके सर। तो 50,000 शेयर्स देंगे बेटा। समझा? ओके सर, 3 से डिवाइड करना जो आया ये टू लाख क्रॉस 50,000। मल्टीप्लीकेशन स्कूल में सिखा दे, 2,50,000 इंटू 3/15। ठीक है सर। ओके। थैंक। यस सुष्मिता, वेरी सिंपल क्वेश्चन रितु। Sir, I have a doubt. So in reconstruction chapter itself, so हाँ in every question I can see that goodwill is to be written off, right? But in हाँ, case in exam, we don't get a statement saying goodwill is to be written off. नो Should we डोंट still राइट be ऑफ, writing off? डोंट राइट ऑफ। Okay. Uh, ओके। yes, sir. And any tips for presentation in exam, like how we should write in the answer sheets? सी, सेम प्रेजेंटेशन विच आई हैव शोन यू। Okay. ओके, दैट प्रेजेंटेशन यू फॉलो। Okay. यस। Okay, sir. Thank you. आदिति। यस बेटा। Yes, sir. So हाँ, I wanted to ask that when we will get the index for this chapter. इंडेक्स इंडेक्स ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। बाकी सभी चैप्टर का मिल गया ना बेटा? Yes, sir. कोई ऐसा चैप्टर जो रह गया मेरे से? यस आदिति, टेक Yes, sir. स्क्रीनशॉट्स। Done, sir. हम्म। Done, sir. कुछ गलत होगा तो बोल देना बेटा। Okay, sir. Done, sir.
Done, sir. बी कैटेगरी, हाँ, दोनों भी. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Taken. चलो ठीक है. ठीक है, so today we'll stop and you can solve that question number 5, 6 by using tick-tick technique, and I hope you have completed all these questions. In next session we are going to start with the past examination questions. Okay, thank you, take care, bye bye. Thank you, sir. Yes, yes, yes.